So, welcome back. This is our next NCERT book reading clip for the chapter 14 Ecosystem. Now, in this clip, we will discuss a concept of ecological pyramids. Now, see, पहले हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड्स ये क्या है पहले देख लेते और फिर हम लोग उसको पढ़ेंगे। इस पे भी क्वेश्चन रहता है और बहुत आसान है। तो पिरामिड कहते ही हमारे आंखों के सामने एक ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर आती है विच हैज़ अ ब्रॉड बेस एंड अ नॅरो अपेक्स. म्हणजे पिरामिड म्हटल्याबरोबर डोळ्यासमोर असा एक भूमितीय आकार येतो ज्याचा बेस ब्रॉड आहे आणि ज्याचा अपेक्स नॅरो आहे. तो पिरामिड तर समजलं. आता इकॉलॉजिकल पिरामिड काय असतं बघा. कोणत्याही इकोसिस्टममध्ये प्रोड्युसर्स आहे म्हणजे प्रायमरी प्रोड्यूसर म्हणजे ट्रॉपिक लेवल 1, प्रायमरी कंझ्युमर्स आहे म्हणजे PC ट्रॉपिक लेवल 2, सेकंडरी कंझ्युमर्स आहे SC ट्रॉपिक लेवल 3 आणि टर्शियरी कंझ्युमर्स आहे म्हणजे TC ट्रॉपिक लेवल 4. तो सर हे तर समजलं की कुठल्याही इकोसिस्टममध्ये प्रायमरी प्रोड्यूसर, प्रायमरी कंझ्युमर, सेकंडरी कंझ्युमर, टर्शियरी कंझ्युमर असतात. तो किसी भी इकोसिस्टम में जो प्रोड्यूसर्स प्राइमरी कंज्यूमर माने हर्बियोर, सेकेंडरी कंज्यूमर माने कार्नियोर, टर्शियरी कंज्यूमर माने सेकेंडरी कार्नियोर है. अब इनका हमें देखना है रिलेशनशिप. तो रिलेशनशिप ऑफ प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर in terms of their number, in terms of their biomass, and in terms of energy. So when you study the relationship between the PP, PC, SC, TC in terms of their number, biomass, energy, this is called as. So when you study their relationship between primary producer, primary consumer, secondary consumer, tertiary consumer in terms of their number, biomass, energy, they will form certain pyramids. Example, to certain grassland ecosystem, Gautar Pradesh. So there is PP, there is PC, there is SC, there is TC, no doubt. म्हणजे एखाद्या ग्रासलँडमध्ये प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन असेल? ग्रास. उसको खाने वाले से रैट्स, उसको खाने वाले से डॉग्स, वाइल्ड डॉग्स, उसको खाने वाले से टाइगर्स. सो ग्रासलँड इकोसिस्टममध्ये PP, PC, SC, TC यांची आपण पाहू रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ नंबर. तो सर प्राइमरी प्रोड्यूसर विल बी ऑलवेज मोर इन नंबर than primary consumer. Primary consumer will be more in number
than secondary consumer, and secondary consumer will be more in number than tertiary consumer. तो देखो एक पिरामिड बन गया, having a broad base and a narrow apex. तो generally speaking, the ecological pyramid, that is pyramid of number, pyramid of biomass, pyramid of energy, have a broad base and a narrow apex. म्हणजे सर तुम्ही म्हणता की पिरामिड ऑफ नंबर असो, पिरामिड ऑफ बायोमास असो, पिरामिड ऑफ एनर्जी असो, कुठल्याही इकोसिस्टममध्ये जनरली ते कसे असतात, ब्रॉड बेस आणि नैरो अपेक्स. म्हणजे नंबर के बारे में अगर बात करें तो पिरामिड ऑफ नंबर में पीपी विल बी हाईएस्ट एंड टीसी विल बी लोएस्ट. पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करें तो बायोमास ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर विल बी फार मोर दैन दैट ऑफ द टर्शियरी कंज्यूमर. एंड एनर्जी की भी बात करें तो प्राइमरी प्रोड्यूसर की एनर्जी सबसे ज़्यादा और टर्शियरी कंज्यूमर की सबसे कम. सो जनरली स्पीकिंग the pyramid of number, pyramid of biomass, pyramid of energy are upright. हे कसे असतात, अपराइट. पण इसको एक्सेप्शन भी रहते हैं. तो अब थोड़ा आगे बात करेंगे. फर्ज करो कि हम लोग बात कर रहे इकोलॉजिकल पिरामिड में नंबर 1 pyramid of number. So what is pyramid of number? Sir, it is the relationship between primary producer, primary consumer, secondary consumer, tertiary consumer in terms of their number. और एग्जाम्पल लो किसी ग्रासलैंड इकोसिस्टम का. तो समझो प्राइमरी प्रोड्यूसर की संख्या करीब करीब 58 लाख है इन पर्टिकुलर एरिया से मीटर स्क्वायर. प्राइमरी कंज्यूमर की संख्या थोड़ी कम है, से 7.5 लाख. सेकेंडरी कंज्यूमर की संख्या और थोड़ी कम है, से 3.5 लाख. और टर्शियरी कंज्यूमर दैट इज टॉप कार्नियोर, उनकी संख्या सबसे कम है, से कुछ 3 है समझो. सो व्हाट इज द शेप ऑफ दिस पिरामिड? Sir, because primary producers are more than primary consumer, which are more than secondary consumer, which are more than tertiary consumer, and so on. So because of this, the shape is upright. अब इसको देखते हैं एक्सेप्शन, और ये नीट क्वेश्चन है. द एक्सेप्शन to the upright pyramid of number is forest ecosystem. अब कैसे देखो, फर्ज करो कि एक वृक्ष है. सो नंबर ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर इन अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज अ ट्री. सो दिस ट्री is say 1. अब इस प्राइमरी प्रोड्यूसर माने ट्री के ऊपर फीडिंग करने वाले जो इंसेक्ट्स होंगे, तो सर झाड तर एकच आहे,
पण त्याच्यावरचे जे इन्सेक्ट्स आहे म्हणजे प्रायमरी कंझ्युमर, तर ते समजा 500 आहे. सो ओनली 1 ट्री बट 500 इंसेक्ट. अब देखो ये तो हो गया इन्वर्टेड एंड दैट इज द एक्सेप्शन. हा नीट क्वेश्चन आहे. सो एक्सेप्शन फॉर पिरामिड ऑफ नंबर इज फॉरेस्ट इकोसिस्टम. ग्रासलँडमध्ये कशी असते पिरामिड ऑफ नंबर अपराईट असते, पण फॉरेस्टमध्ये इन्व्हर्टेड असते. आता मी एग्जाम्पल दिलं कि जैसे कि एक ट्री है उसके ऊपर 500 इंसेक्ट है तो शेप इन्वर्टेड हो गया. पर ये भी सोचो कि इंसेक्ट को खाने वाले स्मॉल बर्ड्स कितने होंगे. तो सर 500 कीड़ों के ऊपर होंगे जैसे 50 बर्ड्स, और 50 बर्ड के ऊपर फीड करने वाले लार्ज बर्ड कितने होंगे. तो सर 1 या 2 होंगे. तो देखो वापिस शेप बदल जाता है. तो दिस इज अबाउट पिरामिड ऑफ नंबर. अब हम बात करेंगे पिरामिड ऑफ बायोमास की. सो नंबर 2, पिरामिड of biomass. So what is pyramid of biomass? Again it is the relationship between PP, PC, SC, TC, but in terms of not number, in terms of their organic matter content, that is biomass content, उनका ड्राई वेट. तो फर्ज करो किसी ग्रासलैंड इकोसिस्टम में द बायोमास ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर इज 809 kg. So this is dry weight per meter square. The biomass of primary consumer, which are say rat, is say 300 kg. Now the secondary consumer in biomass is say 11 kg and tertiary consumer say 1.5 kg. So again primary producer is more in biomass than primary consumer. Primary consumer are more in biomass than secondary consumer, and they are more in biomass than tertiary consumer. So वापस the shape is upright. But this is not always true. The pyramid of biomass also has a exception. The exception is the aquatic ecosystem like a pond. तो फिर ये एक्सेप्शन कैसे हुआ देखो. विचार करा की एका पॉन्डमध्ये जे प्राइमरी प्रोड्यूसर आहे म्हणजे फाइटोप्लैंक्टन, तो उनका बायोमास समझो 3 kg है, और इस प्राइमरी प्रोड्यूसर फाइटोप्लैंक्टन्स को खाने वाले जो फिश होंगे, अगर वो प्राइमरी कंज्यूमर है वहाँ के, तो उनका बायोमास है 300 kg. So primary producer is less in biomass than primary consumer. तो अब तो शेप हो गया उल्टा इन्वर्टेड. सो अब ये भी ध्यान में रखो, ये नीट क्वेश्चन आता कि एक्सेप्शन टू द पिरामिड ऑफ नंबर इज फॉरेस्ट इकोसिस्टम. Exception to the pyramid of biomass is pond ecosystem, where biomass of the small fishes is far more than the biomass of phytoplankton. अब तीसरा, pyramid
of energy. Now, what is pyramid of energy? It is the relationship between PP, PC, SC, TC in terms of energy. So, sir, it is always upright. It can never be inverted. तो फिर ऐसा क्यों? क्योंकि energy is transferred from primary producer to primary consumer to secondary consumer to tertiary consumer. तो जब एनर्जी ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द हायर ट्रॉपिक लेवल, सो पूरी की पूरी एनर्जी तो ट्रांसफ़र होती नहीं. सम इज़ लॉस्ट एज हीट एंड अदर लॉसेस. लॉ ऑफ 10% हमने देखा. तो अगर प्राइमरी प्रोड्यूसर की एनर्जी कंटेंट है 10,000, तो प्राइमरी कंज्यूमर की होगी 1000, तो सेकेंडरी कंज्यूमर की होगी 100, तो टर्शियरी कंज्यूमर की होगी 10 जूल. सो प्राइमरी प्रोड्यूसर 10,000 joule, 10K is 10,000. PC is 1,000 joule. SC is 100 joule. TC is 10 joule. So this is law of 10%. And the solar energy that came to primary producer is far more. Say it is 1 lakh joule. So this pyramid can never be inverted. कोणतं? पिरामिड ऑफ एनर्जी. मग आता लक्षात काय ठेवायचं? जनरली द पिरामिड्स आर अपराइट, दे आर नॉट इन्व्हर्टेड, बट एक्सेप्शन्स आर देअर. सो पिरामिड ऑफ नंबर इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज इन्व्हर्टेड. पिरामिड ऑफ बायोमास इन पॉन्ड इकोसिस्टम इज इन्व्हर्टेड, बट पिरामिड ऑफ एनर्जी never inverted. It is always upright. Now let us check. Ecological pyramids. You are familiar with the shape of pyramid. The base of pyramid is broad and it narrow towards apex. तो सर आम्हाला हे माहिती आहे की पिरामिडचा शेप कसा असतो, ब्रॉड बेस नॅरो अपेक्स. वन गेट अ सिमिलर शेप whether you express the food that is biomass or energy or number relationship between organisms. म्हणजे प्रायमरी प्रोड्यूसर, प्रायमरी कंझ्युमर, सेकंडरी कंझ्युमर, टर्शरी कंझ्युमर यांचा नंबर असो, एनर्जी असो की बायोमास, त्याचे पिरॅमिड कसे असतील? सो ब्रॉड बेस अँड नॅरो अपेक्स असतील विथ सम एक्सेप्शन. So, at different tropic levels, this relationship is expressed in terms of number, biomass or energy. तो relationship between various organisms in an ecosystem in terms of number, biomass or energy gives ecological pyramid. The base of each pyramid represents
producer. So bottom la producer. Or first trophic level, while the apex represent tertiary or top level consumer. So underline, ये पूछा जा सकता कि who represent a apex of any pyramid. So tertiary or top level consumer, that is TC. Three type of ecological pyramid are usually studied. Pyramid of number, that is relationship in terms of number, relative. Pyramid of biomass, that is the relation in terms of dry weight. And pyramid of energy. For details, see the figure 14.4a, b, c, d. So let us check the first picture. Now 14.4a, pyramid of number in grassland ecosystem. Only 3 top carnivore, that is TC, are supported in ecosystem based on production of 6 million plants. So check. P, that is producer, their number is 58,42,000, nearly 60 lakh or 6 million. The primary consumer, that is herbivore, 7,08,000. The secondary consumer, that is primary carnivore, 3,54,000. And tertiary consumer, that is secondary carnivore, only 3. So these are the trophic level, this is the number of individual. So see, the shape is upright. Now next, now 14.4b, this is pyramid of biomass. Show sharp decrease in biomass at a higher trophic level. So again the pyramid of biomass is upright. So producers, their biomass is 809 kg per meter square dry weight. Primary consumer 37 kg per meter square dry weight. Secondary consumer 11 kg per meter square their weight. And tertiary consumer only 1.5 kg per meter square. सो इथंही आपल्याला दिसलं की प्रोड्युसरचं बायोमास सगळ्यात जास्त आणि टॉप लेवलचं सगळ्यात कमी आहे. म्हणजे हे सुद्धा अपराईट आहे, पण या दोन्हीलाही एक्सेप्शन असतात. नाउ द एक्सेप्शन 14.4c, inverted pyramid of biomass. Small standing crop of phytoplankton, that is producer, support large standing crop of zooplanktons. तो पहा, only 4 kg per meter square dry weight of producer, but primary consumer are more in biomass, 21 kg per meter square.
So the shape is inverted. Now 14.4D, ideal pyramid of energy. Observe that primary producer convert 1% of energy in sunlight available to them into net primary productivity. So producer have 10,000 joule, primary consumer 1000 joule, secondary consumer 100 joule, tertiary consumer 10 joule. So this is law of 10%. So 10,000 का 10% 1000, 1000 का 10% 100, 100 का 10% 10. बट ये 10,000 नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बनाने के लिए लाइट कितना है 1 मिलियन जूल, दैट इज 10⁻⁶. तो सर 1 मिलियन का 10,000 कितना है, हार्डली 1%. नाउ लेट अस रीड फर्दर. Any calculation of energy content, biomass or number has to include all organism at that trophic level. तो हम लोग जब इकोलॉजिकल पिरामिड बनाते हैं तो किसी भी कैलकुलेशन में उस ट्रॉपिक लेवल के सारे ऑर्गेनिज्म आने चाहिए. अगर आप सेकेंडरी कंज्यूमर्स की बात कर रहे तो सारे कार्निवोर पकड़ने चाहिए. आप अगर प्राइमरी कंज्यूमर की बात कर रहे माने हर्बिवोर, तो सिर्फ रैबिट ही क्यों, रैट भी है, वहाँ के कुछ बर्ड्स भी है. तो कुछ इसमें लिमिटेशंस आ रहे. एक तो हम लोग सभी को इंक्लूड नहीं करते, दूसरा कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो मोर देन 1 ट्रॉपिक लेवल में हो सकते, तो उस पर ध्यान रखिए. सो एनी कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी कंटेंट और बायोमास और नंबर हैज़ टू इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिज्म एट दैट ट्रॉपिक लेवल. नो जनरलाइजेशन वी मेक will be true if we take only few individual at any trophic level into account. तो हम लोग किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते तब तक जब तक हम बहुत सीमित संख्या में इंडिव्हिज्युअल्स को नापते हैं. जसं मी म्हटलं ग्रासलँड इकोसिस्टममध्ये गवत खाणारे रॅबिट्स आहे, मग तुम्ही रॅट सोडून दिले, अजून गवत खाणारे किडे सोडून दिले. So any calculation of energy content, biomass or number has to include all organism at that trophic level. So no generalization we make will be true if we take only few individual at any trophic level into account. Also a given organism may occupy more than 1 trophic level simultaneously. Thus a bird eating seed is a primary consumer, but the same bird when eat the insect is a secondary consumer. One must remember that the trophic level represent functional level and not species as such. तो कुठलीही ट्रॉपिक लेवल एक फंक्शनल लेवल आहे, एक स्पीसीज नाही. एका ट्रॉपिक लेवलमध्ये अनेक स्पीसीज असू शकतात. तो जैसे किसी जंगल में घास खाने वाले
भैंसा भी हो सकता, गाय भी हो सकती, हिरन भी हो सकता, हाथी भी हो सकता. A given species may occupy more than one trophic level in same ecosystem at same time. For example, now underline. A sparrow is a primary consumer when eat the seed, fruit, peas, and also secondary consumer when eat the insect and worm. Can you work out how many trophic level human being function in a food chain? तो PC, SC, TC, 3 trophic level. In most ecosystem, all pyramid, that is number, energy and biomass, are upright. That is, producer are more in number or biomass than herbivore. Herbivore are more in number and biomass than carnivore. Also, energy at a lower trophic level is more than upper trophic level. But there are exceptions to this generalization. If you were to count number of insects feeding a big tree, what kind of pyramid you will get? Inverted. Now add an estimate of number of small birds depending on insect. Also number of large bird eating the smaller. Draw the shape you would get. That we have drawn already. The pyramid of biomass in sea is generally inverted. Neat question. Underline. लिख लो कागज पे. Pyramid of biomass in sea ecosystem is inverted, and pyramid of number is inverted in forest ecosystem. The biomass of fishes far exceed that of phytoplankton. Isn't it a paradox? क्या ये उल्टा नहीं है? Yes. How would you explain this? Pyramid of energy is always upright, can never be inverted. Neat question. लिख लो. Pyramid of energy is always upright, never inverted, because when energy flow from one particular trophic level to next trophic level, some energy is always lost as heat at each step. म्हणजे समजा वडिलांकडे 1,000 रुपये आहे, तर ते आईला 800 देतील. आई दादाला 500 देईल आणि दादा तुला 100 देईल. वडिलांकडे 1,000 रुपये आहे, तर ते आईला 1,000 पेक्षा जास्त देऊच शकत नाहीत. आईकडे 800 आहे, तर ते दादाला 800 पेक्षा जास्त देऊ शकत नाही. म्हणजे जो टॉप आहे तो कमी कमी होत जाईल. So pyramid of energy is always upright, can never be inverted, because when energy flow from one particular trophic to next trophic level, some energy is always lost as heat at each step. Each bar in the energy pyramid indicate amount of energy present at each trophic level in given time or annually per unit area. However, there are certain limitation to ecological pyramid. आता हे लिमिटेशन हुशार पोरांनी लक्षात ठेवायला पाहिजे, याच्यावर क्वेश्चन येऊ शकतो. सो इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर, इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ बायोमास, इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ एनर्जी जो हम लोग बनाते, उसके कुछ लिमिटेशंस है, मर्यादा है.
ड्रॉबैक्स है, सच एज it does not take into account same species belonging to 2 or more trophic level. माने बर्ड एज अ प्राइमरी कंज्यूमर, बर्ड एज अ सेकेंडरी कंज्यूमर वो पकड़ते नहीं. इट अज्यूम सिंपल फूड चेन, समथिंग दैट ऑलमोस्ट नेवर एग्जिस्ट इन नेचर. तो पिरामिड्स वाले फूड चेन पकडतात पण फूड वेबला महत्त्व देत नाहीत. It does not accommodate a food web. Moreover, saprophytes underline म्हणजे decomposers are not given a place in ecological pyramid even though they play vital role in ecosystem. आता पहा, PP, PC, SC, TC पण कुठेच डिकम्पोजरचं नाव नाही. तो हे 3 लिमिटेशन आहे कि they don't take into account the same species belonging to more than one trophic level. They assume food chain and not the food web, and saprophyte are not given a place. तो भैया ये 4 टॉपिक जो है इसमें से किसी चीज़ को इग्नोर मत करना. ये आपको 10 से 11 क्वेश्चन देगी आउट ऑफ 90 और सबके सब इजी होंगे. सो याच्या फंदात पडू नका. व्हिडिओ लेक्चर आणि हे आणि ते, कारण हे सगळे सिंपल गोष्टी आहे आणि ते या चॅप्टरचे मी जर लेक्चर बनवायला लागलो तर ते 20 होतील आणि इथे 4 लेक्चरमध्ये तुमचं काम होत आहे. सो एनिवे, इन अ नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस इकॉलॉजिकल सक्सेशन, दॅट इज प्रायमरी सक्सेशन, सेकंडरी सक्सेशन, हायड्रार्क सक्सेशन, झेरार्क सक्सेशन, and then we will go further. Thank you.